السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بھائیو بہنوں دوستو، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ نے ہم سب کو دین کی مجلس کے اندر اللہ کے گھر میں جمع کیا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا ہم شکر ادا کرنے والے، اس لیے کہ نیکی کرنا، گناہ سے بچنا یہ اللہ کی توفیق سے۔ انسان کے اندر کوئی کمال نہیں ہے نیک عمل کر لے، انسان کے اندر کوئی کمال نہیں ہے نیک عمل کر لے، انسان کے اندر کوئی کمال نہیں ہے گناہ سے بچ جائے۔ نیکی کرنا بولے تو بھی اور گناہ سے بچنا بولے تو بھی یہ اللہ کی توفیق سے۔ مومن وہ ہے نیکی کر کے خوش ہونے والا، نیکی کر کر خوش ہونے والا۔ کچھ گناہ ہوا، کچھ غلطی ہوا، توبہ استغفار کر کر اللہ کے سامنے ڈرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan, alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita pada saat ini anugerah yang sangat luar biasa. Dihubungkannya kita dengan agama yang sangat mulia. Kemudian dihubungkannya kita di majelis yang mulia, yang mana majelis ini memiliki hubungan dengan agama. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini adalah anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia ini, kehidupan mereka siapapun dia, mereka ini perlu kepada anugerah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa taufik, anugerah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kebaikan yang manusia buat itu adalah semata-mata taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan itu, sebesar apapun kebaikan itu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika manusia bisa menghindari satu keburukan ataupun satu dosa ataupun perkara maksiat, itu bukan karena si manusia ini mampu menghindarinya, tetapi semata-mata mutlak karena anugerah taufik dan hidayah dari Allah, sehingga ia bisa terhindar dari perkara-perkara dosa. Maka hari ini kita dihidupkan di dalam perkara kebaikan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sarratka hasanatun wa sa'atka sayyi'atun fa anta mu'min." Jika amal baikmu membuat kamu senang, kemudian amal burukmu membuat kamu gelisah, maka itu adalah tanda-tanda kamu orang beriman. Maka seharusnya kita duduk di majelis ini, kita harus senang. Kenapa? Karena ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika amal keburukan yang kita lakukan, maka kita harus segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. اللہ نے ہم کو دنیا کے اندر بہت سارے نعمتیں اللہ نے عطا کیا، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اللہ نے ایمان کی دولت دی، اس دعوت کی محنت میں اللہ نے جڑا، دعوت کی محنت میں اللہ نے جڑا، بہت بڑا اونچا کام، ہم اس کی قدردانی کرنے والے۔ اس دعوت کے کام کی وجہ سے ہمارے اندر، یعنی ہم سب کے اندر، محنت کرنے والوں کے ساتھیوں کے اندر اچھے صفات آ جائے۔ تو سب سے جو آسان ہے وہ بولنا، دوسروں کو ترغیب دینا۔ سب سے آسان ہے وہ بولنا ہے، دوسروں کو ترغیب دینا۔ سب سے مشکل ہے عمل کا موقع آیا تو آدمی کو مشکل پڑ جاتا ہے، آدمی کو مشکل پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اس محنت کی وجہ سے ہمارے بڑے حضرات بتاتے ہیں اچھے صفات زندگی میں آ جائیں، اچھے صفات وہ زندگی میں آتے ہیں، وہ اچھے اعمال کی وجہ سے اچھے اعمال کی وجہ سے اچھے صفات آتے ہیں۔ دین بولے تو خالی ٹوپی داڑھی جھبا پہن کے
इस्लाम के अरकान है, इस्लाम के अरकान है। नमाज का पढ़ना, रोजे का रखना, हज करना, ज़कात देना, इस्लाम के अरकान। दीन 5 चीजों का नाम बताया, 5 शोबों का नाम दीन है। ईमानियात और इबादत, मुआशिरत, मुआमिलत, अखलाक, ये 5 चीजें जिंदगी में आना, 5 चीजें जिंदगी में आना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सिफत की वजह से पहचानते। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से कहने लगे, ऐ बिलाल, जिस तरह आप दुनिया में मेरे साथ चल रहे, आप जन्नत में भी मेरे साथ चल रहे, तुम्हारा कौन सा अमल है जिस अमल की वजह से जिस तरह दुनिया में चल रहे और जन्नत में भी चल रहे? या रसूलुल्लाह, मेरा कोई बड़ा ऊंचा अमल नहीं है, जब भी मेरा वजू टूट जाता मैं फौरन वजू बना लेता, 2 रकात नमाज पढ़ता। जो हज़रत सहाबा करने लगे। दूसरा अमल बताए हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला, मेरे से कोई गुनाह होता, गलती होता, मैं अल्लाह के सामने माफी फौरन तौबा कर लेता। तो अच्छे सिफात का आना बहुत जरूरी है। Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak sekali memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada manusia di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak terhitung dan sangat banyak. Dan kalau kita coba menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. Dari semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia di dunia ini, maka nikmat yang paling berharga adalah nikmat iman. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya itu saja. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat usaha atas iman. Jadi hadirin, dengan sebab nikmat usaha atas iman ini, iman terbentuk di dalam kehidupan kita. Iman ada di dalam hati kita. Dan ketika seseorang tidak membuat usaha atas iman, maka iman yang ada di dalam dirinya sedikit demi sedikit akan hilang dan akan terlepas dari dirinya. Kita hari ini diberikan semua nikmat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita iman, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita nikmat usaha atas iman. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Kemudian, apa efek dari keimanan seseorang yang telah dia hasilkan dari usaha atas iman? Maka efek dari keimanan seseorang adalah dia akan memiliki kesemangatan untuk beramal. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal-amal akan dibuat, yaitu dengan tanda-tanda seseorang ada iman di dalam dirinya. Ketika seseorang ini malas untuk beramal, pasti iman yang ada di dalam dirinya itu melemah. Maka efek tanda-tanda dari orang yang ada iman di dalam hatinya, dia akan memiliki kesemangatan untuk beramal. Dan hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hadiah ataupun fadilah dari orang-orang yang beramal? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tanamkan sifat-sifat baik di dalam hatinya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita memahami amal adalah salat, kemudian baca Quran, kemudian berzikir, kemudian zakat, haji ataupun umrah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah amal-amal rukun Islam. Tetapi adapun amal-amal untuk menyempurnakan agama Islam, maka Allah SWT itu ada 5 perkara. Ada imaniyah, ada ubudiyah, muamalah, muasyarat, kemudian akhlak. Yang mana Allah SWT akhlak ini adalah hasil dari 4 perkara tadi, sehingga timbul yang namanya sifat. Jadi Allah SWT telah sama-sama kita ketahui sebelum kita ikut usaha dakwah ini, maka kita tidak pernah memakai peci di atas kepala kita. Kita tidak pernah memakai jubah. Kita tidak pernah memelihara janggut. Tetapi ketika kita buat usaha atas iman, kemudian ada iman, dari iman itu ada amal, dari amal itu ada sifat, yaitu sifat apa? Sifat yaitu untuk menghidupkan cara hidup Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW pun memiliki tanda-tanda untuk mengenal para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu dengan sifat-sifat mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai Bilal,
sesungguhnya ketika aku bermimpi kemudian aku masuk dalam surga, aku melihat ataupun mendengar suara langkah kakimu di dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bertanya, apa amal yang kau buat sehingga aku mendengar langkah kakimu ini, suara langkah kakimu ini di dalam surga? Dan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tidaklah aku ini berwudu kemudian aku mengiringi wudu tersebut dengan salat tahiyatul wudu. Kemudian ketika aku berbuat salah ataupun berbuat dosa ataupun bermaksiat kepada Allah, aku langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu adalah orang seorang sahabat yang berusaha untuk bagaimana ada iman di dalam hatinya. Kemudian dari iman tersebut ada kesemangatan untuk beramal, yaitu sholat, yaitu wudu, kemudian setelah wudu, kemudian sholat. Kemudian senantiasa mengiringi kesalahan-kesalahannya dengan langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifati Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu yaitu dengan penduduk ahli surga. Maka Allah Subhanahu wa taala, itulah agama yang ada dalam kehidupan kita, hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita ini sifat-sifat yang हजरत जी कहते थे, यानी इस दावत के काम का, दीन का जो मेहनत का जो मकसद है, जिस तरह सहाबा रज़ी अल्लाह तआला ने ईमान बनाए थे, फिर भी हर साथी का ईमान सहाबा जैसा ईमान बनाने वाले, सहाबा जैसा ईमान बनाने वाले जो मरकज निजामुद्दीन के अंदर हमारे हजरत जी मौलाना साहब का बरकत हो, एक सुबह का बयान में कह रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलना, अल्लाह का काम करना, अल्लाह के रास्ते में निकलना, अल्लाह का काम करना, सिर्फ दो बातें बताए, एक आदमी का ईमान बन जाए और दीन का इल्म को हासिल, आदमी का ईमान बन जाए और दीन का इल्म को क्या है जो हासिल। जिस तरह सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अजमईन ईमान बनाए थे, तो दोस्त बुजुर्गों, और इसी मेहनत से भी क्या है वो ईमान हम भी बनाने वाले, वो ईमान हम भी बनाने वाले। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह किस तरह ईमान था, कैसे बड़े सहाबी थे, क्या कर रहे, घास का तिनका लेके कह रहे, काश अबू बकर एक घास बन जाता। क्या मुकाम वाले, सारे नबियों के बाद अफजल इंसान है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। ऐसे ईमान वाले, ऐसे सहाबी कह रहे, एक दरख्त के नीचे बैठ के एक जानवर को देख के कह रहे, ऐ जानवर तू ठंडा सांस लेता है, खाता है, पीता, कल क़यामत के दिन तेरा कोई हिसाब नहीं है, कल क़यामत के दिन तेरा कोई हिसाब नहीं है। दोस्तों, ऐसा ईमान मेहनत के जरिए से, दावत की मेहनत के जरिए से ईमान को बनाने वाले। Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, usaha yang kita buat pada saat ini yaitu usaha atas iman. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian sehingga dengan sebab usaha kita itu kita menjadi orang yang beriman ataupun ada iman di dalam hati kita. Maka ini adalah perkara yang sangat besar ataupun perkara yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah suatu ketika Hadirat Maulana Sa'ad Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau juga mengulang-ulang maqullah dari Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Dan pernah suatu ketika beliau ini memberikan bayan subuh di Nizamuddin. Dan Allah Subhanahu wa taala beliau hanya memberikan 2 taufik saja di bayan subuh ketika itu, yaitu usaha dakwah akan menghasilkan 2 perkara. Usaha dakwah akan menghasilkan 2 perkara. Yang pertama adalah dengan sebab seseorang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan ada iman di dalam dirinya ataupun ada di dalam hatinya. Kemudian yang kedua adalah ketika seseorang sibuk untuk bagaimana meletakkan dirinya keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan ada kesemangatan untuk belajar ilmu-ilmu agama. Maka Allah Subhanahu wa taala, efek yang pertama bagi orang-orang yang semangat untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama Allah Subhanahu wa taala diberikannya sifat iman ataupun anugerah iman di dalam hatinya. Dan iman ini juga Allah Subhanahu wa taala memiliki tanda-tanda
yang mana tidak bisa seseorang mengatakan saya beriman tanpa ada tanda-tandanya. Dan Allah Subhanahu wa taala kita lihat sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Pertama adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak sekali orang-orang memuji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan sahabat mengatakan khairun nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebaik-baik manusia setelah Rasulullah SAW atau para nabi adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadirin, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki keimanan yang sangat luar biasa. Sahabat yang paling terkenal namanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki iman, tetapi beliau juga memiliki tanda-tanda iman. Karena suatu ketika Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Abu Bakar duduk di satu pohon ataupun menyender di satu pohon, kemudian melihat satu helai rumput, kemudian mengatakan seandainya aku menjadi sehelai rumput, kemudian aku dimakan seekor binatang, kemudian selesai masa hidupku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pernah juga suatu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang santai, kemudian beliau melihat satu ekor burung yang pergi ke satu pohon, kemudian pergi lagi ke satu pohon. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan seandainya Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi burung tersebut, pergi ke sana kemari, kemudian makan, kemudian habis, maksudnya tidak dihisab pada hari kiamat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang terkenal. Di dalam hatinya ada iman, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab keimanannya tadi memiliki tanda-tanda sifat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. दोस्त को हजरत अब्दुल्ला बिन रवा सहाबी अपने यानी घर के अंदर है, जो उनकी बीवी के रान पे सर रो रहे, उनकी बीवी भी देख के रोने लगी, उनकी बीवी भी देखकर रोने लगी। तो पूछे इनको, आप क्यों रोते हैं? आप जो रो रहे इसी वजह से मैं रो रही हूँ, मुझे जहन्नम याद आया, जहन्नम पे गुजरना है, पुलसिरात पे गुजरना है। आए भाई घर में है, सहाबी है अब्दुल्ला बिन रवा रज़ियल्लाहु अन्हु, घर में और उनकी बीवी के रान पे सर रख करे, जो है तो सहाबा के अंदर लिख करे, उनकी बीवी के रान पे सर रख करे और जहन्नम को याद करके रो रहे। जहन्नम को आखिरत याद आ गया, जहन्नम याद आ गया। आज खबरस्तान को गए भी लोगों को जहन्नम याद आ, जहाँ तो असलियत है, खबरस्तान के भी क्या होगा, वहां भी जाकर के तो दोस्तों हर सहाबी आखिरत वाले थे। सहाबा के निगाह में आखिरत सामने रहता, आखिरत सामने रहता। कल तो अल्लाह के सामने जाना है, मुझे आखिरत में खड़े होना है, जिंदगी का हिसाब देना, जिंदगी का हिसाब देना। Allah Subhanahu wa taala beliau menyampaikan kisah Sayyidina Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Karena suatu ketika beliau bersama istrinya di dalam rumah, kemudian beliau ini tidur di paha istri. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu menangis. Kemudian melihat ekspresi dari Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, istrinya pun ikut menangis. Tetapi sambil bertanya, wahai suamiku, kenapa kau menangis? Tiba-tiba kau menangis ini kenapa? Maka Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu mengatakan, nggak tahu tiba-tiba aku teringat tentang neraka sehingga keluarlah genangan air mata ini dari mata. Kemudian aku ingat bagaimana nanti pedihnya kubur, kemudian bagaimana pedihnya sirat, bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kisah tersebut ada di dalam kitab Hayatus Sahabat yang mana mensifati tentang ketakutan ataupun kekhawatiran para sahabat radhiyallahu anhu. Hadirin, kisah yang kita petik di sini adalah sahabat tadi Abdullah bin Rawaha berada di pangkuan istrinya, kemudian ingat neraka, ingat akhirat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang sangat mahal. Hari ini Allah Subhanahu wa taala, kita jangankan di pangkuan istri kita ataupun di paha istri kita dikubur saja tidak ingat akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala itulah perlu kita tanyakan. Dan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, beliau di pangkuan istrinya ingat akhirat, ingat takut bagaimana nanti di hadapan Allah, bagaimana nanti ketika dihisab, bagaimana nanti ketika di alam kubur. Maka Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhu, mereka memiliki sifat satu yang sangat mulia, yaitu apa? Membelakangi perkara-perkara dunia
kemudian mendahulukan perkara-perkara akhirat. Inilah sifat sahabat yang sangat mulia, yaitu menjadikan akhirat sebagai maksud hidup mereka. तो दोस्त उनको दूसरा जो है वो इबादत के अंदर सबसे बड़े जो पहला क्या है नमाज है। क़यामत के दिन सारे अमाल में सबसे पहला नमाज का हिसाब होगा, नमाज का जो भी हालत आए, परेशानी आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ, नमाज की तरफ, अमाल की तरफ मुतवज्जा हो गए। थोड़ा सा बादल आ गया आसमान, थोड़ा सा बादल आ गया, अल्लाह के नबी मस्जिद की तरफ दौड़ते। सूरज ग्रहण हुआ, नमाज की तरफ मुतवज्जा हुए। चांद ग्रहण हुआ, नमाज की तरफ मुतवज्जा हुए। चांद ग्रहण हुआ, नमाज की तरफ मुतवज्जा हुए। इबादत भी अपने जिंदगियों के अंदर बहुत सारी इबादत है। नफी इबादत के जरिए से आंख अल्लाह बन जाता है, जबान अल्लाह बन जाता है, हाथ पैर अल्लाह बन जाते हैं। उसका मतलब क्या है? आंख अल्लाह के मर्जी के मुआफिक इस्तेमाल होगा, जबान अल्लाह का मर्जी के मुआफिक इस्तेमाल होगा, हाथ अल्लाह का मर्जी के मुआफिक इस्तेमाल होगा। आदमी यहाँ तक है नफी इबादत के जरिए से अल्लाह के करीब पहुंच जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस तरह पढ़ते थे, पाँवों के अंदर वरम आ जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले अल्लाह के नबी के पीछे अल्लाह के नबी का हाल पे तरस खाते, कहते या रसूल अल्लाह, आपके गुनाह है तो भी अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया माफी का, आप क्यों इतना मशक्कत उठाते हैं? अरे आयशा, मैं क्यों अल्लाह का बंदा इस बात पे अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा क्यों ना बनूं? तो इबादत भी हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी। Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting setelah imaniyah adalah ubudiyah. Dan ubudiyah yang paling tinggi posisinya adalah sholat. Karena sholat ini adalah perkara yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali adalah sholat. Apabila baik sholat si hamba tersebut, maka akan baik seluruh amalannya. Dan apabila buruk sholat dari seorang hamba ini, maka akan buruk semua amalannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang amalannya ini akan baik, maka ketika seseorang sholatnya ini baik, maka Allah Subhanahu wa taala seluruh amal-amalnya ini juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sholatnya saja buruk, maka amal-amal yang lain tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan sholat ini sebagai penyelesai masalah Rasulullah SAW. Jadi Allah SWT ketika badai datang, maka Rasulullah SAW segera melaksanakan sholat. Kemudian terjadi gerhana matahari, maka Rasulullah SAW menyelesaikan masalah tersebut dengan sholat. Ada berbagai macam masalah-masalah yang datang kepada Rasulullah SAW ataupun kepada para sahabat radhiyallahu anhum, itu mereka menyelesaikan masalahnya itu dengan sholat. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga memiliki amalan yang disebut sebagai nawafil, dan ini juga disebut sebagai ubudiyah. Amalan ubudiyah, Allah Subhanahu wa taala disebut juga nawafil. Ini adalah salah satu amalan dari ubudiyah. Dan ketika seseorang menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan nawafil, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi mata dia. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi lisannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi anggota-anggota tubuhnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, maksud dari perkataan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mata si hamba tersebut kecuali hanya untuk perkara-perkara kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan lisan si hamba tersebut untuk perkara-perkara kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tangan ataupun anggota tubuh dari si hamba tersebut untuk perkara-perkara kebaikan. Itulah Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang melibatkan dirinya dengan perkara-perkara nafil ataupun perkara-perkara sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seluruh anggota si hamba ini dari perkara-perkara keburukan dan disibukkan dengan perkara-perkara kebaikan. और इसी तरह क्या है, जो इस्लामी मुआशिरत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी पाकीज़ा तरीके खुद हमारी जिंदगी में भी आना और अपने घरों के अंदर भी आना, इस्लामी जो माशरा है। तो आज हमारा दीन जो है वो घर का ढेर तक घर चलेंगे, दीन खत्म। यानी जो घर में दीनदारी जो बाकी रहेगा, वो घर के मस्तूरात दीनदारी होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी पाकीज़ा तरीका
अलैहि वसल्लम ने नूरानी पाकीज़ा तरीके अपनी जिंदगी में भी आना और अपने घरों के अंदर भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से कह रहे अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, ऐ अनस तुम अपने घर में जाया करो, सलाम करके जाना, तुम्हारे लिए तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत का सबब है, तुम्हारे लिए तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत का सबब है। यानी घर का जो माहौल, दीनदारी लाने की माहौल हम फिक्र करें। इस वक्त में मरकज़ निजामुद्दीन के अंदर हमारे बड़े हजरात क्या है, मस्तूरात के काम के बारे में बड़ा जोर दे रहे हैं, बड़ा जोर दे रहे हैं। औरत यानी मस्तूरात के काम के बारे में बड़ा जोर दे रहे हैं, बहुत ताकीद कर रहे हैं। अपने घर के मस्तूरात को लेकर भी अल्लाह के रास्ते में भी, जिस तरह आप दावत का काम कर रहे, दीन की मेहनत कर रहे, जिम्मेदारी समझ के कर रहे, तो मस्तूरात को भी समझाए ये काम क्या है, इस उम्मत में पैदा होने के नाते क्या है, आप मस्तूरात की जिम्मेदार है। अल्लाह का बच्चे भी जिम्मेदार है, बड़े भी जिम्मेदार, बड़े भी जिम्मेदार। Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala bertiga tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat semangat beribadah. Dan pernah suatu ketika Rasulullah SAW di dalam rumah sholat yang begitu panjang. Kemudian sampai kaki Rasulullah SAW ini bengkak. Kemudian ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah begitu lama sekali sampai kaki engkau ini bengkak? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosa-dosamu, baik yang masa lalu ataupun yang akan datang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, apakah tidak layak bagiku menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Jadi Allah Subhanahu wa taala, kesemangatan Rasulullah SAW dengan mengamalkan suatu perkara ibadah ini sampai Rasulullah SAW ini melukai dirinya, sampai kaki Rasulullah SAW ini menjadi bengkak. Dan Allah Subhanahu wa taala itulah amalan yang dibuat oleh Rasulullah SAW di rumah. Sampai Allah Subhanahu wa taala beliau ini merasakan kakinya ini bengkak dengan hanya ibadah sholat saja. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah ubudiyah dalam kehidupan umat manusia ini ada perkara yang ketiga, yaitu adalah muasyarah. Bagaimana kita setelah muasyarah kita ini memiliki kehidupan yang sama dengan Rasulullah SAW. Yang mana bagaimana muasyarah kita ini, pergaulan kita ini mirip dengan Rasulullah SAW. Sehingga dimanapun kita berada, maka Allah Subhanahu wa taala keberkahan akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Ketika kita di luar rumah, kemudian kita muasyarahnya meniru cara hidup Rasulullah SAW, maka akan ada keberkahan di luar rumah. Kemudian ketika kita berada di dalam rumah, kemudian kita muasyarahnya, cara pergaulan yang mengikuti cara Rasulullah SAW, maka akan ada keberkahan di dalam rumah. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah suatu ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Wahai Anas radhiyallahu anhu, apabila engkau ingin memasuki rumahmu, maka ucapkanlah salam. Maka ketika engkau masuk rumahmu dalam mengucapkan salam, maka akan ada keberkahan di dalam rumahmu selama engkau di rumah. Maka Allah Ta'ala, beliau mengatakan bukan hanya karena mengucapkan salam kemudian ada keberkahan di dalam, tapi karena Sayyidina Anas radhiyallahu mengikuti cara hidup ataupun muasyarahnya Rasulullah SAW, itulah yang menyebabkan keberkahan ada di dalam rumah. Jadi bukan hanya sekedar salamnya, tapi karena mengikuti cara hidup Rasulullah, bermuasyarah yang ada di dalam rumah, maka itulah yang akan menarik keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam rumah. Dan Allah Subhanahu wa taala, jadi muasyarah ini bukan hanya kita sibuk di luar rumah saja, tapi bagaimana supaya muasyarah ini kita buat juga di dalam rumah. Jadi bagaimana cara Rasulullah SAW bersama istrinya, bagaimana cara Rasulullah SAW bersama anak-anaknya, itu kita harus meniru cara hidup Rasulullah SAW. Dan efek dari seseorang yang bermuasyarah, mengikuti pergaulan keseharian dengan cara hidup Rasulullah SAW, maka si istri ini akan siap untuk menjadi orang-orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan si anak juga akan memiliki perasaan bahwa saya adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk perkara agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekarang di Indonesia ini sedang ramai-ramainya dibuat jur-jur masturah besar-besaran. Untuk kenapa? Untuk supaya memahami kepada seluruh para wanita bahwa usaha dakwah ini bukan usaha untuk laki-laki saja, tetapi ini adalah tanggung jawab seorang wanita dan tanggung jawab seorang anak-anak yang ada di rumah. Lalu bagaimana cara memahami keluarga kita, baik itu anak-anak,
baik itu wanita di rumah, yaitu dengan kita bermuasyarah di rumah dengan cara Rasulullah SAW. Jadi perlu kita ketahui Allah SWT sekarang hanya laki-lakinya saja yang memiliki, saya ini memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan agama, memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan agama. Padahal Allah SWT baik laki-laki, baik wanita, baik orang dewasa ataupun anak-anak, semuanya mereka memiliki tanggung jawab untuk agama dan untuk usaha atas agama. Maka kita mulai dari mana? Kita mulai dari bermuasyarah, cara hidup Rasulullah SAW di rumah kita. Maka secara otomatis wanita-wanita kita yang ada di rumah, mereka akan memiliki perasaan bahwa agama adalah tanggung jawab saya. Kemudian anak-anak yang ada di rumah kita juga, mereka akan memiliki perasaan bahwa agama adalah tanggung jawab saya. Itulah Allah Subhanahu wa taala efek dari kita bermuasyarah cara hidup Rasulullah SAW. और इसी तरह क्या है जो हमारा मामला थे लेना देना ये भी सही हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास एक आदमी आया, आकर कहने लगा हजरत मेरे लिए एक मेरा बकरी था वो चुरा के लेके चले गया, चोर लेके चले गया, दुआ करो। हजरत दुआ करे भेजता एक बकरी के माहिर को बुलाकर कहने लगे बकरी यानी कितने साल जिंदा है? वो बकरे का माहिर कहने लगा 7 या 8 बरस का है बकरी जिंदा है, 7 या 8 बरस बकरी जिंदा रहे, उसके बाद मर जाता। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इस बस्ती में रहते हैं बागदाद के अंदर, यानी वो बस्ती के अंदर है 7 बरस तक बकरी का गोश्त है। इसलिए वो चोर काम जो बकरी जो यानी वो कोई चोर लेके गया, वो बकरी आज तक तो कटी सका है, वो बकरी आज क्या तो कटी सका। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह यानी जो आजकल हमारा क्या है, ये भी मेरा, ये भी हलाल, वो भी हलाल, ये भी हलाल। दुआ कबूल होने के लिए हमारे हजरत क्या है 2 बातें बताएं एक है दुआ में ध्यान रहना, दूसरा इन खाने वाला गिजा पाक, दुआ में ध्यान रहना, इन खाने वाला गिजा पाक रहना, तो दुआ कबूल हो। अल्लाह वालों के जमाने में एक आदमी था, बड़े नेक थे वो जमाने के अंदर, 2 बच्चे मस्जिद में आकर क्या करते 2 बच्चे, ये चपला सारे भी क्या है जन्नत में जाने वाले, ये चपला सारे जहन्नम में जाने। नमाज के बाद रोज आना मस्जिद में झगड़ा, नमाज के बाद रोज आना मस्जिद में झगड़ा। तो जमाने के अल्लाह वालों के पास भी हजरत हमारे मस्जिद से ये 2 बच्चे चले, उनको कुछ मालूम मत करो, उनको कहीं ले जाके क्या है कोई हराम खाना खिला, ये हराम खाना खिला दो। अब वो साथिया ले गए, वो बच्चों को जाके कोई हराम खाना खिला दिए। जब से क्या है वो बच्चे वो ईमानी जो फिरासत थी वो अमल करना छोड़ दिए, आते नमाज पढ़ते हम चले, आते नमाज पढ़ते हम चले जाए। तो दोस्त बुजुर्गों, हमारा कमाई पाक हो, हमारा गिजा पाक हो, हमारा कपड़ा पाक हो, तो है नहीं हमारी दुआएं कबूल होते। हम अल्लाह का काम कर रहे, अल्लाह के रास्ते में फिर रहे, लेकिन हमारे दुआओं के अंदर जान नहीं है, दुआओं के अंदर जान नहीं। Hadirin Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan untuk perkara yang ketiga, untuk perkara yang keempat yaitu muamalah. Bagaimana muamalah kita ini dengan orang-orang yang ada di sekitar ini adalah dengan muamalah yang baik. Baik itu memberi ataupun menerima, baik itu menjual ataupun membeli, maka kita lakukan semua perkara itu dengan baik. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada suatu kisah pada di zaman Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala datang seseorang laki-laki, kemudian mengatakan kepada Abu Hanifah, sesungguhnya tadi malam kambingku ini dicuri dan aku tidak tahu kambingku kemana, kemudian yang mencuri pun siapa. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah laki-laki itu pergi, kemudian sebelumnya setelah laki-laki mengatakan Imam Abu Hanifah berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kambingku itu. Dan hadis Allah Subhanahu wa taala kemudian Imam Abu Hanifah setelah laki-laki itu pergi berkata kepada orang-orang yang ada sekitarnya, biasanya kambing hidup itu berapa tahun? Lamanya berapa tahun? Kemudian ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala selama Imam Abu Hanifah mengetahui bahwa kambing ini hidupnya 7 tahun 8 tahun, maka beliau tidak pernah makan kambing selama 7 ataupun 8 tahun. Kenapa? Karena takut nanti memakan daging curian tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala segitunya muamalah Imam Abu Hanifah rahimahullah alaih, sehingga beliau menjaga dirinya dari perkara-perkara yang tidak halal.
Sekarang Allah Subhanahu wa taala kita semuanya ini kita halalkan untuk melampiaskan hawa nafsu kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan perkara seperti itu kita menghalalkan segala cara untuk bagaimana melampiaskan hawa nafsu kita, itu akan terhilangnya ruh doa di dalam kehidupan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekarang Allah Subhanahu wa taala itu di Dominic disampaikan juga bahwa berarti Allah Taala beliau mengatakan bahwa syarat terkabulnya doa adalah dua perkara. Yang pertama adalah tawajjuh ketika berdoa, kemudian yang kedua tidak memakan makanan ataupun memakai perkara-perkara yang haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang haram yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ataupun perkara-perkara yang haram yang kita pakai pada tubuh kita ini, itu akan mengangkat, itu akan menghilangkan ruh doa di dalam kehidupan kita. Jadi Allah bisa kita pastikan tidak ada perkara yang paling baik ataupun yang paling mulia, yang paling mustajab doanya adalah ketika keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala itu doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala dia sudah doa berkali-kali tetapi tidak dikabulkan, pasti dia memakai ataupun memakan perkara-perkara yang haram. Karena kadang-kadang Allah kita jaga muamalah kita, jangan sampai ada perkara-perkara yang haram ada dalam kehidupan kita. Karena itu akan menghambat doa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menghilangkan ruh doa dalam kehidupan kita. Jadi pernah Allah Subhanahu wa taala ada kisah beliau menyampaikan seseorang yang memiliki amal ibadah yang sangat luar biasa. Dua anak muda yang memiliki amal ibadah yang sangat luar biasa. Jadi kalau dia cerita tentang surga, maka seolah-olah surga ada di hadapannya. Kemudian ketika dia cerita tentang neraka, maka seolah neraka ada di hadapannya. Dan dia senantiasa menyibukkan dirinya dengan perkara ibadah, sehingga orang-orang yang ada sekitarnya ini takjub. Maka Allah SWT ada sebagian orang yang tidak suka dengan pemuda ini. Maka bagaimana cara menghilangkan amal-amal ibadahnya, tidak dilibatkan dengan perkara-perkara maksiat, tetapi dia dilibatkan dengan perkara-perkara makanan-makanan ataupun memakai perkara-perkara yang haram. Maka Allah SWT singkat cerita, dua pemuda tadi pun ini tergiur dengan makanan-makanan yang haram. Nah, Allah SWT setelah itu dengan otomatis si pemuda tadi memiliki amal ibadah yang sangat lemah. Jadi Allah SWT bisa jadi amal-amal ibadah kita ini yang lemah, itu dengan sebab kita ini mengkonsumsi perkara-perkara yang haram dalam kehidupan kita. Kita menghalalkan segala sesuatu untuk bagaimana melampiaskan hawa nafsu kita. और इसी तरह पांचवा जो है वो अखलाक है। हमारे अखलाक अच्छे हो, हमारे अखलाक अच्छे हो जाए। सहाबा के जमाने में सहाबा के अखलाक देखकर गैर भी इस्लाम में आते थे, यहूदी भी इस्लाम में आते थे। आटा खरीदने के लिए आए और ईमान कलीमा पढ़ के जाए। एक यहूदी, एक सहाबी यहूदी के घर में रहे, सहाबी यहूदी के घर में किराए रहे। वो जमाने में जो पैसा देना था तब रहे, अब घर खाली करके बदल गए। वो यहूदी रो रहा, उनकी घर की औरत, उनके बच्चे रो रहे, कह रहे ऐ सहाबी, ऐ मुसलमान, ऐ मुस्लिम, तुम्हें कभी डराएंगे तो हम भी मुसलमान हो गए। इसलिए रो रहा। वो घर का किराया पैसे दिया नहीं बोल के नहीं रो रहा, इसलिए रो रहा ये सहाबी मेरे घर में, मेरी औरत पे, मेरे बच्चों पे नजर उठाकर भी नहीं देते, नजर उठाकर भी नहीं देते। ऐसे अखलाक वाले ऐ सहाबी कभी तुम आएंगे तो हम सारे के सारे मुसलमान होके रहेंगे, इस्लाम में दाखिल होंगे। आज हम जाकर देखो हमारे इलाके में मुसलमान के लिए कोई दुकान देने के लिए तैयार। एक इलाके में हमारा एक साथी था, जमात का था, मेरे साथ मस्तूरात में भी वक्त लगाए और वो साथी उनके मिलने के लिए मैं गया तो कहने लगा अमित साहब ये सारा बखाला का एरिया, ये हिंदू लोग का एरिया, ये एरिया में किसी को भी दुकान नहीं मिली। भाई तुझे कैसा दुकान मिली, तुझे कैसा दुकान मिली? तो ये क्या है, ब्राह्मण यानी बखाल के लिए दुकान दी, बखाल क्या है दुकान दी, यानी अखलाक की वजह से, अखलाक की वजह से आदमी यानी गैर भी उसके अच्छे अमाल को देख के मुसलमान। दोस्तों इस वक्त में अखलाक की बहुत बड़ी जरूरत है। ईमान, नमाज, अल्लाह के रास्ते की मेहनत, ये तीन अमल की वजह से तीन जिंदगी में आता है।
अखलाक बिगड़ गए, हमारा मामला बिगड़ गया, आया हुआ दीन जिंदगी से निकल गया। एक मुफ्ती साहब कहने लगे इस्लाम का जो छत है वो अखलाक बताए। इस्लाम का छत है अखलाक। चार दीवारा घर पूरा बन गया, लेकिन घर का छावा नहीं। पानी चाहे तो भीगता, धूप आए तो धूप, पानी चाहे तो भीगता, धूप आए तो धूप। इस्लाम का छावन जो है वो अखलाक बताए। आज काम करने वाले साथियों का अखलाक बहुत अखलाक हो। Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima ini adalah perkara akhlak. Ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita ini memiliki akhlak yang baik, memiliki budi pekerti yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat radhiyallahu ta'ala ini terkenal sekali tentang akhlak-akhlak mereka, tentang budi pekerti mereka, tentang kasih sayang mereka. Banyak sekali orang-orang yang sekitar kota Mekah ataupun Madinah, baik itu orang Yahudi ataupun orang lain, yaitu dengan mereka masuk Islam dengan melihat akhlak sahabat radhiyallahu ta'ala. Jadi pernah suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang Yahudi yang mana memiliki tetangga yaitu seorang sahabat radhiyallahu ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba sahabat ini dia ingin pindah rumah. Kemudian si tetangga tadi Yahudi ini dia menangis, yaitu dia memiliki istri, kemudian memiliki anak juga. Maka ketika sahabat ini ingin pindah rumah, kemudian si Yahudi ini menangis, kemudian sahabat itu pun bertanya, kenapa engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Kan aku ingin pindah rumah, kemudian akan diganti dengan orang yang baru. Jadi Allah SWT si Yahudi tadi mengatakan, aku sangat nyaman bertetangga denganmu. Engkau baik dengan keluarga aku, engkau peduli kepada anak-anak aku, dan engkau peduli juga kepada aku. Dan walaupun kita ini bertetanggaan, aku tidak pernah melihat engkau menoleh ataupun mengedipkan ataupun mencuri pandangan untuk melihat istriku. Maka itulah aku yang sangat senang kepada dirimu. Sekarang engkau akan pergi, maka apakah aku akan bisa menemukan tetangga yang lebih baik darimu? Aku tidak menginginkan engkau memberikan uang kepada diriku, tetapi engkau memiliki alat yang baik, itu pun sudah cukup untuk diriku dan untuk keluarga. Maka Allah selama tadi mengatakan, kalau gitu aku tidak jadi pindah rumah, aku akan tetap di sini. Maka Allah yang mengatakan, kalau gitu aku akan mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah dengan sebab akhlak dari sahabat radhiyallahu ta'ala tidak dakwah, tidak mengajak mereka untuk masuk Islam, tetapi hanya dengan menunjukkan akhlak yang baik, maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala si Yahudi tadi pun masuk ke dalam Islam. Dan hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah suatu ketika juga kami pernah keluar waktu itu zaman sekolah, kami keluar ke satu daerah, kemudian kami dapati di sana banyak sekali orang yang sudah mayoritas Islam. Dan hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana banyak sekali toko-toko ataupun warung-warung yang ada di sana orang-orang yang sudah menganut agama Islam. Pernah kami keluar satu daerah yang ada di dunia. Kemudian ada orang-orang kami yang bertanya, wahai Yusuf, dahulu ini mereka adalah orang-orang Hindu yang mereka menyembah patung-patung itu. Tetapi mereka ini alhamdulillah sekarang sudah masuk dalam Islam, yaitu dengan sebab melihat akhlaknya orang Islam. Jadi Allah SWT, satu kampung yang mayoritas Hindu itu bisa berubah menjadi mayoritas Islam dengan sebab melihat akhlaknya orang Islam. Jadi Allah SWT satu mufti, beliau mengatakan akhlak adalah akhlak di dalam Islam itu adalah laksana seperti atap pada rumah. Jadi Allah SWT kalau misalnya kita membangun rumah, kemudian yang sudah kita siapkan, dalam rumah sudah kita siapkan bagus semuanya, tetapi Allah SWT kita rumah itu tidak ada atapnya, maka hujan kehujanan, kemudian panas juga akan kepanasan. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita ini sudah banyak sekali amal-amal ibadah yang kita lakukan dari 4 perkara tadi, imannya bagus, kemudian kemudiannya dimasuknya bagus, kemudian muamalannya bagus, muasaratnya bagus, bahkan istiqomah keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kemudian tidak diiringi dengan akhlak, sama seperti rumah tadi tetapi tidak ada atapnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala penting bagi diri kita untuk bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang tinggi. ये जो सारे सिफात जिंदगी में आने के लिए अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करते हैं, और ये सारे सिफात क्या है? अपनी जिंदगी में आने के लिए अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करना। अल्लाह के रास्ते में क्या है? कुर्बानी करना। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयानात के अंदर लिखकर है, यानी जो ये सब पुजारी
शिव पुजारी है, ये शिव पुजारी जो साथियों का फायदा जभी मालूम होता है, जभी क्या है मालूम होता है, अपने मुकाम पर एक 5 अमाल करने वाला, मुकाम के अंदर 5 अमाल के साथ आदमी शिव पुजारी करता है, वो शिव पुजारी उसे नफा देती है। तो शिव पुजारी क्या करती है? नफा देती। हमारे स्टेट आंध्र प्रदेश जो हैदराबाद है, आगे अमित साहब थे, महमूदा खान साहब इंतकाल हो गए, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। जो हजरत जी तीसरे इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह के जमाने के जो हजरत थे, उनके साथ काम करने वाले महमूदा खान साहब रहमतुल्लाह हैदराबाद के अमीर साहब थे, पूरा तेलंगाना आंध्र के अमीर साहब थे, इंतकाल हो गए। तो हजरत कहते हैं जो आदमी शिव पुजारी करता, शिव पुजारी की कुर्बानी की बरकत से मेरे घर में दीन नहीं आता, मेरी बीवी मेरे बच्चे सारे नमाज नहीं पढ़ते, दीन का काम नहीं करते, मेरे घर में दीन आने का कोई चांस नहीं, दीन आने का कोई चांस नहीं है। ऐसा का आदमी शिव पुजारी पाबंदी से करता है, अल्लाह शिव पुजारी की बरकत से उसके घर में दीनदारी को लगा दी। Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mendapatkan 5 perkara tadi adalah dengan kita menyibukkan diri kita untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak begitu mudah, tapi ada perkara-perkara yang harus kita lengkapi untuk bagaimana setiap kita keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mendapatkan faedah yang sangat besar ataupun mendapatkan faedah yang sangat banyak. Contohnya salah satu amalan supaya kita ini bisa dimudahkan untuk keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan setiap program-program di dalam dakwah ini dengan baik adalah dengan hadir malam markas ataupun hadir malam Sabtu Ghazali. Dan hadir malam Sabtu Ghazali ini itu juga akan memberikan faedah bagi orang-orang yang berhasil melaksanakan 5 amal maqami mereka. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ada orang-orang yang hadir markas kemudian 5 amal maqami ini tidak dikerjakan, maka saya berani katakan dia hadir di dalam markas tapi dia tidak akan mendapatkan faedah apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mendapatkan faedah dari hadir malam markas ini adalah syaratnya untuk kita melakukan ataupun menyempurnakan 5 amal maqami. Ketika 5 amal maqami ini sudah sempurna, maka barulah kita akan bisa mendapatkan faedah ataupun manfaat dari malam markas. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam malam markas ini juga adalah laksana seperti charging ataupun casan, yang mana dia akan memberikan kesemangatan selama 1 minggu ke depan untuk beramal. Jadi ada salah satu hadrat ataupun guru ulama di zaman Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaih, yaitu namanya Naimullah Khan, yang mana beliau ini senantiasa bersama Maulana Inamul Hasan untuk melaksanakan usaha dakwah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Naimullah Khan ini rahmatullah alaih, beliau sudah meninggal dunia. Beliau mengatakan yang aku rasakan ketika aku hadir malam markas ataupun Sabtu Ghazali adalah aku dan keluargaku memiliki kekuatan seminggu ke depan untuk mengamalkan amal-amal agama. Seperti istriku rajin sholat, kemudian anak-anakku juga rajin sholat, ataupun melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ketika aku terluput dari 1 kali saja malam markas, itu memiliki efek kelemahan mengamalkan agama selama 1 minggu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Sabtu Ghazali adalah perkara yang sangat penting bagi seseorang yang ikut ambil bagian dalam usaha dakwah. Dan hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya mendapatkan faedah yang banyak dari Sabtu Ghazali ini adalah menyempurnakan 5 amal maqami, dan fadilahnya adalah memiliki kesemangatan selama 1 minggu ke depan untuk mengamalkan amal-amal agama. तो 2 शिविर को और इसी तरह मरकज निजामुद्दीन के अंदर प्रेजेंट इस वक्त में सासा मोहम्मद हजरत जी कह रहे मर्दों के लिए 2 काम। ये क्या है? मुकाम पर है, मस्जिद की यानी आबादी मेहनत के अंदर है। मस्जिद की आबादी 24 घंटे हमारे मसाजिद अल्लाह के घरे किस तरह आबाद, 24 घंटे मसाजिद किस तरह आबाद हो। मस्जिद आबाद रहेगी, अल्लाह का घर आबाद रहेगा, मस्जिद दुआ देगी। मस्जिद क्या है? दुआ देगी। इस वक्त में एक बड़े मुफ्ती साहब कह रहे निजामुद्दीन के अंदर, मुफ्ती इलियास साहब बोल करे यानी जो बातिल वो यानी मस्जिदों में नहीं आएगा, यानी मस्जिदों में जब आएगा जब अल्लाह क़यामत को कायम करेगा।
यानी बातिल जो बाजार में फैल गया है, दुकान में फैल गया है, सड़कों में है, बस स्टैंडों में है, रेलवे स्टेशनों है, एयरपोर्टों के पास है, सारी दुनिया में बातिल फैला हुआ। बातिल की जो ताकत है सारी जगह चल रही है। यानी जिस वक्त में मसाजिद में आएगा उस वक्त में अल्लाह क़यामत को कायम करेगा, क़यामत के करीब। तो दोस्त बुजुर्गों, हम मस्जिद वाले बने, यानी अल्लाह का घर को आबाद करने वाले, अल्लाह का घर को मस्जिद को आबाद करने वाले, यानी हमारा दिल मस्जिद में अटका हुआ। Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Hadrat kita mengatakan untuk laki-laki dalam usaha dakwah ini mereka memiliki dua tanggung jawab, yaitu bagaimana mereka melakukan lima amal qawli, kemudian yang kedua adalah menghidupkan masjid selama 24 jam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan masjid selama 24 jam, maka itu akan memberikan efek yang sangat besar bagi seorang dai. Dan menghidupkan masjid selama 24 jam itu akan mendatangkan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang ketika ada seorang hamba atau beberapa kaum yang mana ia ini menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 24 jam. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala usaha bagi laki-laki itu dengan 5 amal qawli kemudian menghidupkan masjid ini selama 24 jam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini perkara-perkara batin, yaitu mereka berusaha bagaimana dengan kebatilannya ini mereka buat usaha selama 24 jam. Jadi sekarang pasar 24 jam, kemudian stasiun 24 jam, berbagai macam fasilitas duniawi itu mereka berusaha selama 24 jam. Sedangkan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ingin buat usaha atas agama tetapi tidak mau menghidupkan masjid selama 24 jam. Dan beliau mengatakan salah satu tanda kiamat adalah yaitu kosongnya masjid dari orang-orang yang tidak mau datang ke masjid. Tanda-tanda kiamat adalah kosongnya masjid, maksudnya tidak akan ada lagi orang yang mau menghidupkan masjid selama 24 jam. Tidak ada lagi orang yang mau berusaha untuk menghidupkan masjid 24 jam dan tidak ada orang yang mau datang ke masjid. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka akan pergi kepada perkara-perkara yang batin. Mereka akan siap pergi ke pasar 24 jam, kemudian pergi ke toko aja 24 jam, pergi ke fasilitas kerja duniawinya 24 jam. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masjid tidak dihidupkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala penting bagi kita untuk bagaimana menghidupkan masjid selama 24 jam. तो दोस्तों को और इसी तरह दूसरी बात बता रहे, हर साथी अल्लाह का काम करने वाला, इस तरह सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अजमईन अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए अपना ये काम को मकसद समझते थे, ये काम को मकसद समझते थे, दावत को और अल्लाह के रास्ते में, यानी जितना आपकी कुर्बानी के साथ अल्लाह के रास्ते, कुर्बानी के साथ क्या है? अल्लाह के रास्ते, यानी जो उसका कुर्बानी का असर क्या है? लोगों पे, महलों पे, बस्ती पे पड़ेगा, लोगों पे, महलों पे, बस्ती पे पड़ेगा। एक मरकज निजामुद्दीन के अंदर मौलाना जमशीद साहब दामद सरकार बुजुर्ग गए, इस वक्त में जितने भी आलिमा है, 1 साल को जाने वाले, 2 साल को जाने वाले, ज्यादा तरकीब क्या है? मौलाना जमशीद साहब का वो हजरत के रहे बयान के अंदर, कुरानों के जोड़ के अंदर एक आलिम आए दूसरा साल जाने के लिए अल्लाह के रास्ते, दूसरा साल जाने के लिए अल्लाह के रास्ते में एक आलिम आए, उनसे पूछे मौलाना जमशीद साहब दामद बरकत, आप उनको तनख्वाह है 10,000 रुपये, आपका जो तनख्वाह है 10,000 रुपया है, मस्जिद की इमाम है 10 देते 12 देते, नहीं तो हमारे तो सऊदी एरिया में 15-20 हज़ार देते, 10-12 हज़ार तनख्वाह है। आप अब अल्लाह के रास्ते में साल के लिए जा रहे, दूसरा साल के लिए, अब क्या लेकर जा रहे, किस तरह आपका खर्चा कैसा? वो मौलवी साहब कहने लगे मैं अल्लाह के रास्ते में जा रहा, मेरे पास 2-3 महीना यानी 20,000 पैसा, 20,000 पैसे है, अब मैं घर में भी देकर जाना और मेरी घरवाली को भी पैसे देकर जाना, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरी बीवी से मुश्किल, मेरी बीवी कहने लगी तुम अल्लाह के रास्ते में दूसरा साल जा रहे, मेरा पैसा नहीं खोले, मेरे जो गले में का जेवर है, सोना है, ये ले लो, सोना क्या है लेकर जाओ। वो मौलवी साहब कहने लगे
मौलाना जमशीद साहब मैं दूसरा साल किया आया, मेरे गले में भी मेरी बीवी का गले में का माल बेच कर मैं अल्लाह के रास्ते में दूसरा। तो मौलाना जमशीद साहब कह रहे आज अल्लाह का काम करने वाले 2-2 साल लगाने वाले अपने घर के मजदूरात का यानी जो माल बेच के अल्लाह के रास्ते में, माल बेच कर क्या अल्लाह के रास्ते। Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usaha dakwah ini adalah usaha tanggung jawab bersama. Jadi baik itu untuk kita ataupun untuk istri kita ataupun untuk anak-anak kita, ini adalah usaha dakwah ini adalah tanggung jawab bersama. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala ataupun sahabiah, baik mereka yang muda ataupun yang tua, baik mereka ini anak-anak, mereka memahami bahwa usaha agama ini adalah tanggung jawab pribadi mereka. Sehingga Allah SWT, karena mereka ini merasa, para sahabat radhiyallahu ta'ala merasa bahwa usaha ini adalah tanggung jawab diri pribadi, maka akan ada kemudahan bagi mereka untuk mengorbankan hartanya keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu menginfakkan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah. Kenapa? Karena mereka menyangka bahwa usaha dakwah ini adalah tanggung jawab saya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah suatu ketika ini kemudian dibuat jur ulama. Kemudian yang memberikan bayar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maulana Jamshid hafizahullah ta'ala. Dan ketika itu Allah Ta'ala ketika masa-masa ini sudah terakhir, kemudian beliau memberikan tasbih, datanglah seseorang ulama yang mengatakan, aku siap keluar 1 tahun, aku siap keluar 1 tahun yang kedua. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maulana Jamshid pun bertafakutnya, kamu keluar 1 tahun yang kedua, apakah engkau memiliki uang? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ulama tadi mengatakan, aku biasa digaji dari hasil usaha ngajarku ini. Kemudian setelah aku itu ternyata uang gajiku ini tidak cukup. Jadi aku biasa digaji dalam setiap bulan itu sekitar 20.000 rupiah. Tapi aku itu semua ini tidak cukup untuk keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku pun mengatakan kepada istriku, wahai istriku, sesungguhnya aku ingin keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk 1 tahun yang kedua. Tetapi setelah aku itu uangku ini tidak cukup. Bagaimana aku akan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini cerita ataupun dari si ulama tadi ketika ditanya oleh Maulana Jamshid hafizahullah ta'ala di judul ulama tadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya si ulama tadi menceritakan bahwa ketika aku mengadukan kekurangan tapakuku ini kepada istriku, maka istri mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya kau akan keluar 1 tahun yang kedua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini aku memiliki kalung, aku siap untuk diberikan kepadamu, kemudian kau jual, kemudian kau gunakan untuk keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di 1 tahun yang kedua. Maka masalah Maulana Jamshid hafizahullah pun takjub mendengar kisah dari ulama tadi yang mana istrinya siap menghilangkan ataupun menjual atau memberikan karunia ini kepada suaminya untuk suaminya keluar, untuk suaminya bisa keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang istri ataupun seorang wanita yang memiliki perasaan ataupun tanggung jawab untuk bagaimana agama yang ada dalam kehidupannya, memiliki bahwa usaha dakwah ini adalah tanggung jawab saya, maka istri ini pun akan siap mengorbankan harta untuk suaminya keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri-istri kita di rumah ini, mereka tidak siap untuk mengorbankan harta yang ada pada diri mereka supaya suaminya keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menghabiskan harta suaminya sehingga si suami ini tidak bisa keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri yang seperti ini belum ada di dalam hatinya tanggung jawab untuk perkara agama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita terus lagi dan lagi membuat usaha ini, maka itu akan memasukkan ke dalam hati-hati keluarga kita ini tanggung jawab dengan usaha agama. बहुत सारे कुर्बानियां करी। हरदर निजामुद्दीन के अंदर मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने के मुंशी जी बोल के अल्लाह दत्ता मुंशी जी बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। यानी मरकज का निजामुद्दीन का जो सारा वो पैसे का और लोगों को चावल सौदा लगाना, खरीदना, करंट का बिल भरना पूरा उनकी जिम्मेदारी था। जिस तरह आप इस वक्त में मौलाना यूसुफ सिलोनी दावत बरका को जो हजरत का था, वो जमाने में मुंशी जी अल्लाह दत्ता बहुत बड़े अल्लाह वाले। तो एक बार आए मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर कहने लगे, हजरत जमात आकर है
दोपहर के लिए खाना नहीं, जो सौदा के लिए जो बंगाल के पास बनिया के पास गया हूँ वो सौदा नहीं दिया, बहुत सारा खर्च होकर सौदा खाने का सौदा नहीं दिया। तो मौलाना यूसुफ साहब कहने लगे रहमतुल्लाह अलैह, अभी क्या है मेरी बीवी के पास जितना माल है पूरा माल अल्लाह के रास्ते में खर्चा है, अल्लाह के रास्ते में खर्चा कर दिए। आखिरी खाना में 2 झुमके बचे हुए, खाना में 2 झुमके बचे हुए, मैं घर में जाऊंगा सारा कारोबार सुना बस अब क्या भी मत बोलो। अब मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह घर में चले, उनकी बीवी उनकी अम्मी से बात करने में खुशी में थे, इतने में मुंशी जी आए, आगे दरवाजा खटखटाए, कौन है? हजरत मैं मुंशी जी हूँ, क्या बात है? हजरत जमात आकर, अल्लाह के रास्ते की मेहमान जमात आकर है, वो दुकान वाला सौदा नहीं दिया, बहुत सारा खर्च होकर है, सारा कारोबारी सुना। घर में बीवी की तरफ देखी तो बीवी कहने लगी मुंशी जी को रोक, घर में जाके पेपर लेके आके अपना खाना में का जेवर निकाल के पेपर में लपट करे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए लेकर कहने लगे, आखिरी जेवर था अल्लाह के रास्ते के मेहमानों को खिलाने के लिए वेस्ट करे, यानी आखिरी जो माल था वो माल भी क्या है अल्लाह के रास्ते में जो मेहमानों को खाना खिलाने के लिए। तो दोस्तों बड़े हजरात क्या है बहुत सारी कुर्बानियां करें, मतलब निजामुद्दीन है वो देखने की दीवार से 4 दीवारें है, देखने की दीवार से 4 दीवारें। पड़ोस मुल्क के हाजी अब्दुल साहब जो हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, यानी वो 4 दीवारी के अंदर तो आदमी जाता है, ईमान का साथ ईमान का हुआ भी वहां पे मिलता है। वो जगह है कुर्बानी किया हुआ जगह। साहब की हमारी जमात आ रही तो उस वक्त कोई कहने लगे जगह का तासीर, जगह का असर होता है, तासीर होता है। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी जो मदीना को जा करे वहाँ से उम्रे की इरादे से रास्ते में ये जगह फजर सुबह की नमाज खजा हो, वो जहाँ नमाज खजा हुआ वहाँ पे अल्लाह की नमाज नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे नमाज नहीं पढ़े, यानी वो जगह को टाल करे दूसरा पे जगह पे जा करे खजा नमाज पढ़े, खजा नमाज। एक बादशाह का वाकया बता, एक बादशाह के पास एक हजाम रहा था, एक हजाम रहता था, रोजाना दाढ़ी करता रोजाना, और एक दरख्त के नीचे जाके बैठ के वो बादशाह क्या है वो हजाम से दाढ़ी करा। तो जब भी वो हजाम में छुरी क्या है बादशाह के इसमें जाता तो बादशाह से कहता, बादशाह जहाँ पड़ा मेरा बेटा जवान, तुम्हारी बेटी की जवान, दोनों को देखो शादी करेगी। अब बादशाह क्या है देखता, ऊपर देखे तो छुरी है ना हजाम के पास, छुरी किसके पास है हजाम के पास, क्या तो बोले तो गले के पास आ जाए, तो खामोश हो जाए। बाहर आकर हजाम को बहुत पिटाई करता, अरे तेरा हैसियत का मेरा हैसियत का मेरी बेटी से तेरा बेटे की शादी हो, इस तरह 2-3 बार हुआ। तो वजीर कहने लगे बादशाह जामा इस हजाम का कोई गलती नहीं, जहाँ तुम बैठ के हजामत करा रहे वहाँ पे खोदो, बैठ के हजामत करा वहाँ पे खोदो, वहाँ पे खोदा गया, वहाँ पे एक बहुत बड़ा माल खजाना निकला, बड़ा माल खजाना निकला। ये माल का तासीर है, ये तासीर की वजह से ये हजाम भी कह रहा है मेरा बच्चे को तुम्हारी बेटी को देखो शादी करो। जमीन का तासीर, माल का तासीर, माल का तासीर। और इसी तरह तो दोस्त वो यानी अल्लाह का काम जो इज्तिमाई तौर पे बंद हुआ, उसके बाद मरकज़ निजामुद्दीन से जो शुरू हुआ है अल्लाह ने वहाँ से काम लिया है। हर शादी की फिक्र करे, हम अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करें, अल्लाह के रास्ते में दूर देर के लिए 4-4 माह के लिए सारी दुनिया में अल्लाह का काम करने के लिए निकले। Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usaha dakwah ini dia ini memiliki fondasi, dan fondasi usaha dakwah ini adalah pengorbanan. Sejauh mana seseorang berkorban untuk mengorbankan harta, diri dan waktunya untuk bagaimana usaha agama ini, maka sejauh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan memberikan faedah ataupun manfaat yang besar kepada orang yang berkorban. Jadi Allah Subhanahu wa taala usaha dakwah yang dijalankan tanpa ada pengorbanan, maka usaha dakwah itu adalah perkara yang sia-sia. Lebih baik sedikit berdakwah didasari dengan pengorbanan, tetapi daripada banyak berdakwah tanpa didasari dengan pengorbanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala karena inti dari usaha dakwah itu adalah korban. Sejauh mana seseorang berkorban, maka sejauh itu dia akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perkara agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala kita hari ini melihat Markas Nizamuddin hanya masuk jamaah, keluar jamaah, masuk jamaah, keluar jamaah, masuk ke pengiriman jamaah, kemudian pengeluaran jamaah. Tetapi kita tidak mengetahui ada orang-orang terdahulu yang mana di dalamnya itu memiliki orang-orang yang berkorban ataupun mengorbankan harta diri dan waktunya untuk usaha agama ataupun untuk usaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Yusuf alaihi beliau ini memiliki seseorang pemegang kunci amanah. Kalau sekarang adalah masih hidup ini adalah Muhammad Yusuf Siwani. Itu beliau memiliki tanggung jawab untuk memegang Baitul Mal kalau kita uang amanah. Maka Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Yusuf ada salah seorang Yusuf yang mana biasa memegang Baitul Mal ataupun uang amanah ini. Dan Nabi Allah Subhanahu wa taala jadi ketika jamaah datang, maka pembelian ataupun keperluan di markas ini itu mengambil dari uang amanah tersebut. Dan Nabi Allah Subhanahu wa taala setiap selesai kemudian melaporkan kemana Nabi Yusuf, setiap selesai kemudian melaporkan kemana Yusuf. Tapi pernah suatu ketika Nabi Allah Subhanahu wa taala pada sekitar jam 10 yaitu sebelum waktu Yusuf itu datang, banyak sekali orang-orang yang datang ke markas Nizamuddin yang mana mereka ingin mendaftarkan dirinya keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan uang yang ada di Baitul Mal ketika itu sudah mulai menipis. Dan Allah Subhanahu wa taala si Buzruk tadi dia tidak mau mengadukan langsung kepada Muhammad Yusuf alaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala dia pergi ke salah satu toko kemudian meminta supaya menghutangkan dulu makanan-makanan yang ada. Nanti kalau misalnya uang Baitul Mal sudah pulih baru kami akan bayar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala toko-toko pun mereka tidak siap untuk diutangi barang-barangnya. Sehingga akhirnya yang pemegang busuk yang memegang amanah ini dia pun sudah kebingungan harus kemana lagi dia melaporkan. Jamaah datang sementara keperluan ini tidak cukup, untuk makan siang ini tidak cukup. Jadi masalah terpaksa lah dia mengadu kepada Maulana Yusuf rahmatullah. Kemudian dia mengetuk pintunya, Assalamualaikum. Kemudian Maulana Yusuf rahmatullah Waalaikumsalam, siapa? Saya Maulana Yusuf, ini pemegang Baitul Mal ataupun kunci amanah. Kemudian Maulana Yusuf rahmatullah mengatakan, ada apa? Maulana, sesungguhnya hari ini dapat laporan bahwa banyak sekali jamaah yang datang ke Nizamuddin yang ingin keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tidak memiliki keperluan yang cukup untuk memberikan makan mereka. Dan hadir Allah Subhanahu wa taala, Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi mengatakan, baik, kamu tunggu dulu di sana, nanti aku akan berikan kabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala singkat cerita, istrinya pun bertanya, ada apa? Maka Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi mengatakan, banyak sekali hari ini jamaah datang tadi kita jam 10. Kemudian mereka siap keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dapur itu keperluan sudah mulai menipis dan orang yang memegang kunci amanah ini sebelum tadi dia pun sudah berusaha untuk meminta ataupun berhutang kepada orang-orang yang ada di sekitar, tetapi mereka tidak memberikannya. Maka sekarang aku ingin supaya aku ini bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Yusuf rahmatullahi pun melaksanakan sholat kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Allah Subhanahu wa taala ternyata setelah beliau melaksanakan sholat, kemudian di belakangnya ini ada istrinya. Kemudian istrinya mengatakan, "Wahai Maulana, sesungguhnya ini kalungku, sesungguhnya ini gelangku, sesungguhnya ini antingku, engkau jual untuk memberikan keperluan jamaah." Maka Allah Subhanahu wa taala hari ini kita melihat Nizamuddin hanya bangunan begitu saja. Hari ini kita melihat Nizamuddin hanya keperluan makan dan minum saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala Nizamuddin adalah tempat yang mana di situ ada satu keluarga yang mereka mengorbankan harta diri dan waktunya untuk usaha atas agama. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan, kalau engkau hatinya ingin tersentuh dan engkau juga ada terpercik kena korban dari satu keluarga tadi, maka sering-seringlah datang ke Nizamuddin, maka hawa ataupun rasa berkorban ini akan meningkat. Jadi Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang penuh dengan pengorbanan. Jadi dengan korban tadi, ibarat Allah Subhanahu wa taala ini masih bekerja ataupun masih aktif sampai sekarang. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu juga
juga di zaman Rasulullah SAW. Beliau ini adalah orang-orang yang keluarganya ini penuh dengan pengorbanan. Telah sama-sama kita ketahui istri beliau yang tadinya orang kaya, kemudian menjadi jatuh miskin. Untuk apa? Untuk mensupport dakwahnya Rasulullah SAW. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ada kisah seorang raja Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana seorang raja ini dia memiliki pembantu yang biasa mencukur janggutnya, Tidak ada seseorang yang biasa rutin mencukur janggut si raja tadi. Dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala pernah suatu ketika si tukang cukur janggut si raja tadi ini yang mengatakan, wahai raja, engkau kan punya anak perempuan, aku punya anak laki-laki, mau nggak engkau menikahkan anak perempuan ini dengan anak laki-laki? Maka Allah Subhanahu Wa Taala, si raja ini mengatakan di dalam hatinya, siapa engkau? Siapa engkau berani-beraninya yaitu melamar anak raja? Kemudian Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi terbesit di dalam hati raja ini perkataan si tukang cukur tadi, yaitu ingin melamar dari anak perempuan. Singkat cerita, si raja ini pun dia datang kepada si ahli wazir ataupun menterinya, kemudian mengatakan bahwa si tukang cukur janggut ini dia meminta supaya anak perempuan ini nikah dengan anak laki-lakinya. Kemudian dia mengatakan, wahai tuan raja, engkau hanya melihat diri pribadi si tukang cukur tadi, padahal dia adalah orang yang sangat kaya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, si raja pun mengatakan, dari mana kau tahu kalau dia adalah orang kaya? Wahai raja, coba kau datang ke rumahnya, kemudian dia itu memiliki satu toko untuk menyukur rambut atau menyambut, maka kau datang ke sana, kemudian kau perintahkan dia untuk mengangkat kursi yang ada di bawah itu. Kursi yang biasa tempat orang cukur rambut itu engkau angkat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sudah cerita, si raja itu datang ke bapaknya, kemudian meminta supaya si tukang cukur rambut tadi untuk mengangkat kursinya, memindahkan kursinya, kemudian untuk menggali apa yang ada di bawah tanahnya. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala setelah digali, yang ada di bawah tanahnya ini adalah harta yang berlimpah yang disimpan oleh si tukang cukur rambut tadi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang dia sengaja simpan untuk sengaja memang bagaimana dia memiliki misi supaya anaknya ini bisa menikah dengan anaknya raja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kisah dari yang beliau sampaikan tadi adalah, jadi kita ini jangan melihat penampilan orang lain, kita jangan melihat bangunan yang hidup, tetapi lihat bahwa di dalam hidup ini ada harta-harta yang sangat berharga, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam sana akan ada takdir, akan ada perubahan, akan ada perasaan bahwa dia akan siap untuk mengorbankan harta dirinya untuk keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala, bapak-bapak ini adalah orang-orang yang ahli korban. Maka sekarang yang belum pernah 4 bulan silakan daftarkan nama yang 4 bulan. Kemudian yang sudah 4 bulan dia untuk 6 bulan.